Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.6 up to question number 2nd. Now in this video we are going to move ahead from that. That means this video will start from question number 3rd, right? So हम देखते हैं इस question number 3rd के अंदर क्या given है. A soft drink is available in 2 packs, right? So एक soft drink जो है वो 2 packs में available है. First is a tin can with a rectangular base, right? Of length 5 centimeter and width, or you can say the breadth as 4 centimeter, having a height of 5 centimeter, right? So यहाँ पे जो सबसे पहला soft drink का जो पैक है वो क्या है, एक टिन कैन है जो जिसका बेस जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है as 5 centimeter and 4 centimeter. Also the height of this tin can is given to us as 15 centimeter. Now let me just first see this tin can. What we have to do actually is we have to find out that, let me just read here the second part. Now the second pack here is a plastic cylinder with, you can see, circular base. So दूसरा पैक जो है वो क्या है, एक प्लास्टिक सिलेंडर शेप में है जिसका बेस जो है वो क्या है, सर्कुलर है, and its diameter is given to us as 7 centimeter and also the height of this can is 10 centimeter, right? So इसका जो बेस है सर्कुलर, उसका diameter given है and also the height is given. You can see both are 7 and 10 centimeter respectively. Now हमें क्या करना है, हमें बताना है कि दोनों कैन में से किस कैन का कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है एंड बाय हाउ मच. सो जिसकी ज्यादा है उसकी कितनी ज्यादा है दूसरे वाले से, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. सो सबसे पहले हम दोनों कैन्स की क्या निकालेंगे, कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर दोज कैपेसिटीज एंड फाइंड आउट that which container has greater capacity and by how much, right? So let us start this question here. So the starting of this solution with the given thing, right? So सबसे पहले मैं first can की बात करूंगा. So first can, right? So यहाँ पे क्या given है हमें, that you can see the tin can with a rectangular base. So you can see length of rectangular base, that is 5 centimeter, right? Then also you can see the breadth is given to us as 4 centimeter and finally the height of this container, or you can say that can, that is 15 centimeter, right? So I'm starting off this, you can see first part here. So यहाँ पे मैं इस tin can की क्या find out करने वाला हूँ, capacity, right? So हमें पता है कि capacity हम किससे find out करते हैं, simply so the capacity of tin can, or you can say container, right? Whatever you want to write. So यहाँ पे हमें पता है capacity L into B into H, इससे find out होती है. Now you can see हमें यहाँ पे जो length, breadth और height given है, they are in centimeter. So यहाँ पे जो capacity आएगी that will be in centimeter cube, right? Because हमें पता है कि हमेशा volume जो होती है, or you can say the capacity is measured in cubic unit, right? So यहाँ पे centimeter cube में आएगी. Now let me just simply substitute the values given to us. So यहाँ पे length कितनी है, आप देख सकते हैं 5 into breadth हमें given है, that is 4 into height, that is 15, right? Now 5 into 4, that is 20, 20 into 15, right? So there will be 300 centimeter cube, right? So you have got the capacity of this tin can, or you can say the container, the soft drink, you can see, of the first pack, right? Now let us move on to the second part now directly. So before that, let me just make some space above. So you can see in the second, you can see part here, you can see the can, or you can say the soft drink is available in plastic cylinder, right? So which is having the circular base of diameter. So हमें क्या given है, the diameter of circular base. So that is, you can see 7 centimeter, right? Then also the height of this is given to us as
10 centimeter, right? So यहाँ पे हमारे पास diameter given है, so we know how to calculate the radius. Simply divide the diameter by 2. So 7 upon 2, you can also write it as 3.5, whatever you like, right? So 3.5 centimeter, right? So यहाँ पे हमारे पास radius आ गई. Also we know the height. Now let me just tell you that here you have to find out, you can see the capacity of a cylinder, right? So now let me just tell you, if I just talk about the previous one, so हमने देखा था that the volume of a cylinder was calculated by pi r square h, right? So formula याद रखिए आप, that the volume of cylinder is pi r square h. This is the formula. Now we need the radius and height, and both is present here, right? So now let me just calculate that. So I'm going to erase this. So you can say, if I just find out the capacity of, you can see, cylinder, so that will be pi r square h, right? So let me just now substitute the value of pi, that is 22 upon 7. Now what is radius here? So अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास radius आप चाहे तो 7 upon 2 place कर सकते हैं, या फिर 3.5 भी place कर सकते हैं, right? So if I just place 7 by 2, that will be easier to solve, right? So r square का मतलब radius 2 times multiply कर दी मैंने directly, right? Into height, you can see that is given to us as 10. So now if I just solve this, so 7 1 is 7, 7 1 is 7. So this will get reduced. Now 2 1 is 2, 2 11 is 22. Then further again you can see 2 1 is 2, 2 5 is 10. So if I just multiply these, so 11 7 is 77, 77 into 5, right? So that will be, you can see the capacity of this container. So let me just solve this. So 5 7 is 35, 3 carry, then 5 7 is 35, 36, 37, 38. So 385 centimeter cube, right? Because we know that the capacity is always calculated in cubic units, right? So here the you can see unit was centimeter, so that will be centimeter cube, right? Now you can see further, you can see if I just compare on these two capacities of the containers, so you will find out that this plastic container has greater capacity than the, you can see, rectangular base tin can, right? So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Let me just make some space first. So you can see here that clearly you can say this plastic cylinder container has greater volume than, you can see, what was the previous one? The tin can, right? Then the tin can or container. Now by how much? So हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा है इस, you can see, plastic cylinder container की capacity. You can write the capacity here, right? So कितनी ज्यादा capacity है इसकी इस tin can से, मैं इसमें से इसको minus करूंगा. So 385 minus, you can see, 300, right? Centimeter cube. So अगर मैं इसको minus करता हूं, so you can see here 385 minus 300, that will be 85 centimeter cube. So आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ चुका है that the plastic cylindrical container has greater capacity than the tin can, or you can say container, by 85 centimeter cube, right? So this is what you have to find out in this question. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 4th is given to us as, let me just read it first. So if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square. So now you can see lateral surface का मतलब क्या होता है? The curved surface, right? So the curved surface area is given to us as 94.2 centimeter square, right? Now यहाँ पे हमें एक cylinder का curved surface area given है, that is 94.2 centimeter square, right? Then also the height is given to us as 5 centimeters, right? Now
we have to find first the radius of its base and then its volume, right? Also, it is given that we have to use the value of pi as 3.14, right? So अगर मैं यहाँ पे एक roughly एक cylinder draw कर लेता हूँ first, so something like this. Now you can see हमें इसका curved surface area कितना given है 94.2 centimeter square, right? So this outer surface area, that is the curved surface area, is given to us as 94.2. Now you can see also the height of this cylinder is given to us as, you can see, 5 centimeters. So ये हमें यहाँ पे question में given है. So let me just start off the solution with the given thing, right? So हमें given क्या है? Simply the curved surface area of cylinder. So that is 94.2 centimeters square. Also you can see the height of cylinder is 5 centimeter, right? So ये था given thing हमें. Now you can see in the first part we have to find out the radius of the base. So यहाँ पे आप देख सकते हैं this will be the radius of base and that is what first we have to find out, right? So let us focus on this first part now. So हमें radius कैसे find out होगी? Let me just tell you here. So in the first part हमें given क्या है उससे start करते हैं. So curved surface area of cylinder is given. So curved surface area of cylinder, that is given to us as 94.2, right? Now मुझे पता है कि curved surface area का formula क्या होता है of a cylinder. If you just remember, that is 2 pi r h, right? So अगर आप पहले पीछे जो हमने starting में देखा था about the surface area when we were dealing about, so हमने देखा था the curved surface area of a cylinder is calculated by 2 pi r h, right? Now remember, at this point I'm going to tell that अगर आपको formulas याद हैं, only then you are able to solve the questions in this chapter, right? So the formulas are really important, right? So आप formulas को अच्छे से याद कीजिए. Now आप देखिए cylinder का curved surface area क्या होता है? 2 pi r h, right? Equal to, अब मुझे already given है curved surface area, so मैं equate कर देता हूँ इन दोनों को, right? Now let me just now substitute the value. So 2 into pi. अब pi की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी यूज करनी है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, यू कैन सी हियर, राइट? सो r लिख देता हूं इसको एज इट इज. अब हाइट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5 इक्वल टू 94.2. नाउ अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देख सकते हैं ये 2, 3.14 और 5 जो है ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे? इन द डिवीजन ऑफ द राइट हैंड साइड, यानी कि 94.2 के डिवाइड में आ जाएंगे. और हियर on the left hand side r will be remaining. So 94.2 into, sorry, not in multiply, in the division. So there will be 2 multiplied by 3.14 multiplied by 5, right? अब यहाँ पे मैं डेसिमल रिमूव करने वाला हूं. आप ध्यान से देखिए, अगर यहां से डेसिमल रिमूव करूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगी? 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद, तो 2 जीरोस आ जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा, राइट? देन अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगी, यानी कि 10 से नीचे मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा, राइट? सो इफ आई जस्ट रिमूव दिस डेसिमल नाउ ऑल्सो फ्रॉम हियर, सो नाउ यू कैन सी एट दिस स्टेज हम क्या करते हैं, आप देखिए ध्यान से, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट? देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, राइट? अब अगेन ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 से रिड्यूस हो गया. Now only thing that is remaining here is now 942 divided by 314, right? So बाकी सब reduce हो चुका है. So if I just check out, तो मैं इसको देखता हूँ किसके ये दोनों reduce होते हैं या नहीं, right? So if I just simply divide this, so 942 by 314, right? So let me just check out. So 314 into 3, so 3 4 जा 12, 1 carry, 3 1 जा 3 and 1 4, 3 3 जा 9. So आप देख सकते हैं कैसे 3 के टेबल पे ये completely divisible हो रहा है. So you can see 314, 3 जा 942. So you will get the radius as 3 centimeters. Getting my point? So यहाँ पे हमने radius find out कर ली, which was required in the first part. Now it's time to move on to the second part. That is, we have to calculate the volume of this cylinder, right? So remember the formula to calculate the volume of a cylinder, that is pi r square h, right? So let us see what will be the volume. So I'm going to erase this.
So I'm starting the second part here. So now you can see the volume of cylinder is pi r square h, right? So हमने इसे पिछले पार्ट में रेडियस फाइंड आउट कर ली. Also we know the height here. So simply हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पाई की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी रखनी है, 3.14. Let me just correct that. Then in the multiply radius square. So what is the radius? That is 3 square into height. You can see height is 5. So now if I just solve this, so 3.14, now 3 का square करता है, 3 into 3 that is 9 and 5 as it is, right? Now मैं क्या करता हूँ, डेसिमल रिमूव करता हूँ, तो डिवीजन में कितना आएगा 100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे आपके पास, राइट? सो नाउ द डेसिमल इज रिमूव्ड. नाउ आप क्या कीजिए, 100 को एज इट इज रखिए डिनोमिनेटर में और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट विल मेक इजियर, राइट? सो 314 into 9, और यू कैन से 9 into 5 क्या होता है, 45. 45 into 314, दैट विल मेक द कैलकुलेशन फास्टर, राइट? सो मैं डायरेक्टली इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, राइट? देन 5 1 जा 5 6 7, देन 5 3 जा 15, राइट? मल्टीप्लाई. नाउ लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई 4 विद दिस. सो 4 4 जा 16, 1 carry, 4 1 ja 4 and 1 5, 4 3 ja 12, right? So let me just add them. So 7 plus 6 13, 1 carry, 5 plus 5 10 and 1 11, so 2 3 and 4, right? So then 1, so this will be, you can see 1 4 1 3 0. So this 0 will now get reduced. So यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 0 यानी एक डिजिट से पहले डेसिमल, so that will be 141.3, then you can see centimeter cube, right? Because हमें पता है वॉल्यूम किस में कैलकुलेट होती है, in cubic unit, right? So quite easy, just you have to simply first find out the radius of this circular base of the cylinder, and then you can see volume by this formula by substituting the radius and the height given to us. So then you will get simply the volume of this cylinder, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 5th is given to us as, let me just read it. So it costs 2200 rupees to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel, right? So यहाँ पे जो cylindrical vessel जिसको inner curved surface area जो है पेंट करने में कितने रुपीस लग रहे हैं, 2200 rupees, and this cylindrical vessel has having the depth or you can say the height as 10 meter, right? So यहाँ पे हमें height भी given है of this cylindrical vessel, that is 10 meters, right? So यहाँ पे सबसे पहले मैं एक cylindrical vessel draw कर लेता हूँ. So as you can see here, it is given that the inner curved surface area, right? So that means let me just draw first this cylinder here. So आप देख रहे हैं अंदर वाला जो curved surface area है from the inside, that costs rupees 2200 to get painted, right? So अंदर वाले curved surface area को पेंट करने में इतना चार्ज लगा. So you can see the cost is given to us as 2200 rupees, right? Also you can see हमें यहाँ पे क्या given है, depth given है, that means the height of this cylindrical vessel, right? So that is 10 meters, right? So अब यहाँ पे given है that if the cost of painting is at the rate of, you can see 20 rupees per meter square, right? So हमें 1 meter square, अगर सपोज कीजिए मैं इस वेसल का सिर्फ इतना सा हिस्सा ले लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, सो इतना अंदर से पेंट करने के लिए कितना चार्ज लग रहा है, दैट इज रुपीज 20, राइट? सो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, राइट? सो मुझे अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर लेट मी जस्ट ऑल्सो रीड द अदर टू पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द रेडियस ऑफ बेस, राइट? Then we have to find out the radius, and in the third part we have to calculate the capacity of this, you can see, cylindrical vessel, right? So start करते हैं इस first part से. हमें क्या find out करना है, the curved surface area, the inner curved surface area of this cylindrical vessel, right? So starting off the solution with the given thing, right? So मुझे given क्या है, simply the cost of painting inner curved surface area, right? So that is 2200 rupees, right?
सो ये हमें यहाँ पे गिवन है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया. नाउ ऑल्सो यू कैन सी हमें क्या गिवन है द रेट ऑफ you can see painting 1 meter square area is 20 rupees, right? So ये हमें given है. You can see the cost of painting 1 meter square area. So अगर मैं inner curved surface area सिर्फ 1 meter square area लूं तो उसको पेंट करने का चार्ज कितना है 20 rupees. अब अगर आप ध्यान से देखिए टोटल जो कॉस्ट है पूरे इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की वो कितनी है 2200 रुपीज. सो अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को डिवाइड कर दूं, यू कैन सी द रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया से. सो मेरे पास क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल जो इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट हो रहा है उसको कितना चार्ज लग रहा है 2200 रुपीज. सो अगर मैं टोटल कॉस्ट को अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया की कॉस्ट से डिवाइड करूंगा सो टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया मेरे पास आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनर कर्व सरफेस एरिया. गेटिंग माय पॉइंट. सो ये ट्रिक हुई जिससे हम कैलकुलेट करेंगे द इनर कर्व सरफेस एरिया. आप देख रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना था एंड उसका चार्ज हमें ऑलरेडी गिवन था कि टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में कितना रुपीस लगे थे 2200 रुपीज. और यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का रेट गिवन था हमें दैट वाज 20 रुपीज. सो अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं इस टोटल कॉस्ट को सो व्हाट वी विल गेट इज द इनर कर्व सरफेस एरिया, राइट. बिकॉज उसी को ही तो पेंट करने में ये चार्ज लगा है, राइट. सो अगर 1 मीटर स्क्वायर का अगर हमें रेट पता है सो उससे डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा इनर कर्व सरफेस एरिया. और वही हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है, राइट. सो आप देख सकते हैं इसको रिड्यूस कीजिए 0 से 0. नाउ 2 1 जा 2 2 11 जा 22 एंड अ 0, राइट. सो आपके पास कितना आ गया कर्व सरफेस एरिया दैट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी इन मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी यू कैन सी द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल, राइट. सो आपको वे समझ में आया कैसे फाइंड आउट करेंगे. सिंपली हम टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस इनर कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे द रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट. सो दिस विल गिव यू द इनर कर्व सरफेस एरिया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. अब जैसा कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम है दैट इज 110 मीटर स्क्वायर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू फाइंड आउट द रेडियस. So in the second part you can see we have to find out the radius. Now we know that the curved surface area is 110 meter square जो कि हमने first part में calculate किया. Now remember if you just know how to actually calculate the curved surface area of a cylinder, formula क्या होता है जिससे हम calculate करते हैं curved surface area of a cylinder, that is 2 pi r h, right. So मैंने इसका formula लिख दिया इसके नीचे इक्वल टू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कर्व सरफेस एरिया को दैट इज 110, राइट. सो ये मैंने क्यों लिखा फॉर्मूला. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई मुझे पता है 22.7. रेडियस यू कैन सी जो हमें कैलकुलेट करनी है और हाइट जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट. सो ओनली द मिसिंग थिंग देन विल बी द रेडियस. और इक्वेट मैंने किससे किया है कर्व सरफेस एरिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट. सो इस तरीके से हम यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे रेडियस ही मिसिंग है. सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं यू कैन सी 2 into 22/7. लेट मी जस्ट करेक्ट दैट इनटू रेडियस जो हमें फाइंड आउट करनी है. हाइट आपको पता है यहाँ पे कितनी है 10 इक्वल टू 110. अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7 जो है ये डिवाइड में है तो वहां पे कहां जाएगा मल्टीप्लाई में. देन ये 2 22 और 10 जो है मल्टीप्लाई में है तो वहां कहां जाएंगे डिवाइड में. सो यहाँ पे क्या बच जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली रेडियस, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दैट विल बी 7 डिवाइड बाय 2 into 22 into 10, राइट. सो नाउ यू कैन सी 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगी. देन 11 1 जा 11 11 2 जा 22, राइट. सो आपके पास क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 into 2 कितना होता है 4, राइट. नाउ चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल सो यू कैन जस्ट डिवाइड हियर. सो 4 1 जा 4 minus that will be 3 decimal 0 4 7 जा 28 minus that will be 2 decimal की वजह से 0 आएगी 4 5 जा
20, right? So that will be reduced. So यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1.75 meters, right? So आप चाहे तो 7/4 जोड़ सकते हैं या फिर 1.75 in the decimals, right? So now let us move on to the third part. So जैसे कि हमने यहाँ पे radius find out कर लिया है, that is 1.75 or you can say 7/4 meters, right? अब बात करते हैं the capacity of this cylindrical vessel, which is the third part which we have to find out, right? So if I just make some space now, so you can see in the third part, we know that the capacity of cylinder is calculated by pi r square h, right? So हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकलती है, by pi r square h, right? So यहाँ पे अब मुझे पता है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस। अगर आप ध्यान से देखें हमने जस्ट कैलकुलेट की अभी, तो आप चाहे 7/4 रख सकते हैं चाहे 1.75। सो मैं यहाँ पे 7/4 रखता हूं ताकि इजी हो जाए ना। आर स्क्वायर का मतलब मैं ऑलरेडी डायरेक्टली इसको क्या लिख दूंगा 2 times, राइट? स्क्वायर लगाने से जाए मैं 2 बार लिख देता हूं इसको मल्टीप्लाई में। नाउ हाइट इज ऑलरेडी गिवन हियर एज 10, राइट? नाउ 7 1 7 7 1 7, राइट? देन आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 4 2 11 22, राइट? नाउ आप देख सकते हैं 2 1 2 2 5 10। सो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, आप देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 11 into 7 77 77 into 5। लेट मी जस्ट कैलकुलेट हियर। सो 77 into 5 5 7 35 3 carry 5 7 35 plus 3 38, राइट? सो 385 डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में कितना बच गया 4, राइट? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली सॉल्व दिस। सो आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द डेसिमल, सो इफ आई जस्ट डिवाइड दिस, सो 4 9 36, right? So removing, you can see subtracting this, so 8 minus 6, that is 2, 3 minus 3 is 0, no need to write, so 5. Now 4 6 24, right? Subtracting will give 1, then a decimal, a 0, 4 2 8, you can see. So if I just check out now, so 5 minus 4 is 1, then decimal, then a 0, then 4 2 8, then again 2 remaining, decimal 0, 4 5 20, right? So you can see we have got 96.25, right? So that will be, you can see the capacity in meter cube, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीजें मीटर में थी, so it will be in meter cube। और हमें पता है कैपेसिटी हमेशा क्यूबिक यूनिट में फाइंड आउट करती है, right? So that will be 96.25 meter cube. You can see the capacity of this cylindrical vessel. So that was all in this question here.